Welcome, dear students. Today we are going to explore one of the most powerful tools in the modern chemistry, computational chemistry, and specifically the density functional theory or the DFT. इस में आप टाइटल देख सकते हैं कि ट्रांसलेटिंग द इनविजिबल, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि केमिस्ट्स दे ऑफन डील विद द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर पार्टिकल्स एट दिस लेवल, एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन हमने कभी डायरेक्टली इन पार्टिकल्स को एटॉमिक लेवल पे, जो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, इवन द मॉलिक्यूल्स, हमने डायरेक्टली ये कभी इनको देखा नहीं है। तो ये इनविजिबल हैं, और यूजिंग द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री वी कैन translate these invisible. In the image you can see there is a flask combined with the colorful electron cloud, और ये ब्यूटीफुली एक रिप्रेजेंट करता है इस आइडिया को। फ्लास्क आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एक ट्रेडिशनल जो आपकी एक्सपेरिमेंटल लैब है, and the colored cloud actually represents the computational prediction of electron behavior. So this lecture is about moving from physical experiments to the digital prediction engines. कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, और स्पेसिफिकली ये जो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एंड फेवरेट कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री मेथड, DFT. It will help us to see the invisible electrons mathematically. और इसमें जो अभी जैसे ये एक इमेज इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, दिस इमेज एक्चुअली the image of flask and the electron density cloud. It represent a bridge between the real and the virtual chemistry, the bridge between the experimental chemistry and the digital chemistry, digital predictions, computational chemistry. So in this lecture we will talk about the DFT. तो हम start करते हैं। In this slide, we can see a relationship between the theory and experiment. On the left side, you can see an experimental lab setup, a real world जो testing हम करते हैं। जो लोग हमारे, जो researcher, जो students experimental labs में काम करते हैं, they know very well कि experiments are actually very costly, very expensive, sometimes very slow, और even sometimes impossible हो जाते हैं, especially जब highly unstable molecules हैं, reaction intermediates हैं, इस तरह की chemical जो species हैं involve होती हैं। तो there is an aspect of uncertainty जब आप experiment कर रहे होते हैं। On the right side you can see a theoretical setup, और इस थियोरेटिकल सेटअप में हम जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री मेथड्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो केमिस्ट्री के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल जो इंजन्स हैं, इनको हम यूज करते हैं टू प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, रिएक्शन पाथवेज, स्टेबिलिटीज, एनर्जीज। तो ये हम सारी प्रिडिक्ट की करते हैं बिफोर वी स्टेप इनटू द एक्सपेरिमेंटल लैब। तो ये जो डाटा, प्रेडिक्शन डाटा होता है, ये जितना भी डाटा हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कलेक्ट करते हैं, ये डाटा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्सपेरिमेंट का और थ्योरी का, एक जो वर्चुअल वर्ल्ड का और एक जो एक्सपेरिमेंटल जो फिजिकल वर्ल्ड है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनके दरमियान एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये कोई एक दूसरे की कोई कंपीटिंग अप्रोचेस नहीं है, ये कोई एक दूसरे को कंपीट नहीं कर रही। ये बहुत जो अप्रोचेस हैं, एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं, ये बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं।
ठीक है, तो इसमें थ्योरी क्या करती है? थ्योरी गाइड्स द एक्सपेरिमेंट एंड द एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्योरी को वैलिडेट करता है। तो दोनों जो है वो एक सिम्बियोसिस में है, दोनों एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए दे आर कम्प्लीमेंट्री, दे ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। Here we can compare the different computational chemistry methods. इसमें here you can see the molecular mechanics है, semi empirical है, density functional theory है, ab initio methods हैं जिनमें Hartree fork है, post Hartree fork methods है। So हमारे पास जो methods हैं इनको अगर हम ब्रीफली देखें तो मॉलिक्यूलर जो मैकेनिक्स है ये इज़ अ वेरी फास्ट मेथड बट नॉट वेरी एक्यूरेट मेथड्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को डील नहीं करता। ये मेथड जो है ये एक क्लासिकल जो फिजिक्स को फॉलो करता है, और इसमें हम एटम्स को और जस्ट लाइक एक स्फीयर्स या बॉल्स कंसिडर करते हैं, एंड दे आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू द बॉन्ड्स, दे बॉन्ड्स बिहेव लाइक द स्प्रिंग्स। अल्ट्रा फास्ट है क्योंकि इसमें हम जो ज्यादा डेप्थ में जाके जिस तरह बाकी मेथड्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इसमें वो एस्पेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है उसको हम अल्ट्रा फास्ट कंसिडर करते हैं। और ये जो ज्यादातर हमारे जो मैसिव जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, हम उनके लिए ये सुटेबल मेथड है। उसके बाद सेमी इंपिरिकल मेथड्स हैं, और ये क्वांटम मेथड्स हैं, और इनमें भी हम ये भी फास्ट मेथड्स हैं, एक्यूरेसी इनकी मॉडरेट है। ये जो लार्ज ऑर्गेनिक सिस्टम्स हैं उनके लिए यूज होता है। और अब डीएफटी जो है वो चूंकि हमारा करंट लेक्चर का टॉपिक है, तो डीएफटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टडी करती है। स्पीड मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, फास्ट भी नहीं है, एक्यूरेसी बेहतर है एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। और इसमें ज़्यादातर मीडियम लार्ज जो सिस्टम्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। एब इनिशियो मेथड्स हार्टी फोर्क और पोस्ट हार्टी फोर्क जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, बट दे आर वेरी स्लो। और इसमें हम एग्जैक्ट जो है वो वेव फंक्शन को स्टडी करते हैं, और इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और एक्सट्रीम आपने जो प्रिसीजन के साथ अगर स्टडीज करनी हो तो हम एच एफ और जो पोस्ट आर टी फोर मेथड्स हैं उनको चूज करते हैं। और ये सिलेक्टिंग द राइट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी आपने कंसिडर करने हैं। फिर आप जो सिस्टम आपका है उसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी जो आपकी चॉइस है, ये एक चॉइस आपकी देर always a balance between the physical accuracy and the processing speeds। ये जो तीन चार फैक्टर्स आपको मेजर फैक्टर्स बताए गए हैं, तो ये डिफरेंट अवेलेबल मेथड्स हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज कर सकते हैं। Now, this is the most important question in computational chemistry. Why does DFT dominate modern chemistry? As you can see on the left side of the slide, uh, here you can see the ab initio methods. These methods are mathematically very rigorous methods, but computationally uh, they are very accurate methods. Mathematically, they are rigorous and they are very accurate methods. But the problem is written here, you can see computational paralysis. So what is the meaning of computational paralysis? These methods are so computationally expensive uh, for the real and the everyday molecules, uh, और ये इतने expensive हैं कि you can say they become almost unusable methods. So mm, you might need days
and the weeks and even on the super computers. मैं ये वर्क स्टेशंस की, आपने जो पर्सनल आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स पे भी अगर आप एब इनिशियो कैलकुलेशंस को रन करेंगे, सो देयर विल बी दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और वो टाइम जो है, इवन दिस टाइम नीड्स द डेज, वीक्स एंड इवन मोर देन वीक्स। तो ठीक है, दे आर वेरी गुड मेथड्स, दे आर वेरी एक्यूरेट मेथड्स, बट प्रैक्टिकली अगर इनको देखा जाए तो ये उस तरह फिजिबल मेथड नहीं है। एंड इफ वी सी ऑन द राइट साइड, molecular mechanics, M, so these methods are extremely fast, ये बहुत फास्ट मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट इंस्टेंट आप कह सकते हैं। इन मेथड्स में वो हर्डल नहीं है जो एबनिशियो मेथड्स में थी, कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अगर टाइम का यहाँ पे फैक्टर देखें तो दे आर वेरी फास्ट मेथड्स, बट अगेन द प्रॉब्लम इज रिटन वेरी क्लियरली, इलेक्ट्रॉनिक blindness. Electronic blindness means के they completely ignore the electrons. और केमिस्ट्री आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, केमिस्ट्री इज ड्रिवन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। सो विदाउट स्टडीइंग द इलेक्ट्रॉन्स, आप जो है वो उस सिस्टम की केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। सो इफ यू इग्नोर द इलेक्ट्रॉन, तो आप जो केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट आप उसको मिस करेंगे। सो वी हैव टू ट्रांजिशन to the DFT. We have to transition to the central part, which is the density functional theory, high accuracy, and as far as the cost is concerned, it can be also managed. So it falls between these two extremes, or density functional जो theory है, therefore we used the word sweet spot. So this is the sweet spot for the computational chemists, somewhere between the two extremes, computational paralysis and the electronic blindness. So accuracy काफी ज्यादा है, they are highly accurate methods, manageable computational cost है, not too slow, not too simple, just the right balance between these two aspects. So इसमें जो DFT है, ये इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को कैप्चर करती है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको स्टडी करते हैं, और इसमें डिपेंड करता है, अगर आपके पास लार्जर सिस्टम है तो इट मे रिक्वायर, इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग बट नॉट लाइक एब इनिशियो मेथड्स। तो ऑन एवरेज, विदाउट यूजिंग द हैवी सुपर कंप्यूटर्स फॉर द वीक्स, DFT जो है वो इलेक्ट्रॉन बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकती है। सो एब इनिशियो मेथड्स जो हैं, दे आर टू हैवी, molecular mechanics, they are too blind, but the DFT is a very practical, balanced approach. So in the modern chemistry, we can easily say that the DFT is the most widely used computational chemistry method. Now let's understand the core paradigm shift in the modern quantum chemistry. From tracking individual electrons to modeling the entire electronic cloud. लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, वी हैव द टू डायग्राम्स हेयर। लेफ्ट साइड पे एक वेव फंक्शन का आपको टाइटल नजर आ रहा है, एंड राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी DFT का जो है वो टाइटल आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, और इस ट्रेडिशनल अप्रोच में वो यूज द वेव फंक्शन, and this actually tries to describe the exact behavior of every single electron simultaneously at the same time। जो है वो हम एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम में मौजूद है, वो हम उन सबको स्टडी कर रहे होते हैं। और इस डायग्राम में देखें तो देयर इज अ स्टेडियम, और उसमें जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, दे यू कैन कंसिडर देम इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रेड आपको स्ट्रिंग्स नजर आ रही हैं,
ये हम हर इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो पूरे स्टेडियम में मौजूद लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम उनको एग्जामिन कर सकें। दिस इज एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेव फंक्शन साइमल्टेनियसली जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ऑन द राइट साइड जो है द अप्रोच इज डिफरेंट। वहां पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे एक आपको इंडिविजुअल अप्रोच की बजाय एक ओवरऑल स्कैनिंग मैप नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जितने भी लोग वहां पे बैठे हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली स्कैन करें, स्टडी करना शुरू कर दें, तो मैथमेटिकली दिस इज ओवरवेलमिंग। मतलब आप के लिए ये कितना फिजिबल होगा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचें तो कंप्यूटेशनली इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब आप इतनी बड़ी जो एक पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की स्टेडियम में, यू कैन सी ऑलमोस्ट द स्टेडियम इज फुल, और ये दीज नंबर जो है वो दे आर इन द थाउजेंड्स। सो आप इनको स्टडी करना चाहते हैं individually and simultaneously, तो it's not feasible, it's almost impossible. But on the right side the scenario is different. On the right side जो है वो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो DFT के लिए हमने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दी है, तो इसमें हम इंडिविजुअलिज्म की बजाय हम एक कंप्लीट जो है वो उसको क्लाउड कंसिडर कर रहे हैं, और उस क्लाउड को हम जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं पूरे स्टेडियम में, हम उसको एक एज अ क्लाउड कंसिडर कर रहे हैं। और इंडिविजुअल को ट्रैक करने की बजाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो पीपल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं इन द स्टेडियम, आप इनको जस्ट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें। तो इनको इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने की बजाय, इंडिविजुअल्स को स्टडी करने की बजाय, उनका बिहेवियर देखने की बजाय हम एक कंटिन्यूअस जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स को या इंडिविजुअल्स को एक कंटिन्यूअस क्लाउड के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। और इसमें जो एक बड़ी ड्रामेटिक चेंज आएगी वो ये है कि हम इसमें हम एक ओवरऑल 3D जो स्पेशल प्रोबेबिलिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हम उनको एक एज अ सिंगल फ्लूइड एंटिटी के तौर पे देख रहे हैं। और कंप्यूटेशनली ये जो अप्रोच है, दिस इज वेरी एफिशिएंट। ठीक है, आप इसको जो है वो एक जितने भी वहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप, और इसके कुछ जो रीजन्स हैं वो येलो कलर के हैं, कुछ रीजन्स के हैं। एंड द सिमिलर डायग्राम आप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की देखेंगे मॉलिक्यूल्स के केस में, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी से जो है बेस करते हुए डिफरेंट रीजन्स नजर आएंगे। तो आप ओवरऑल जो है वो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो ये जो अप्रोच है एज कंपेयर टू दिस ट्रेडिशनल वेव फंक्शन अप्रोच, ये कंप्यूटेशनली बेसिकली, क्योंकि हमने हमारा एंड जो हमने जो चीज़ें लेके जानी है एंड तक, उसमें हमने इनको कंप्यूटेशनली कैलकुलेट भी करना है। तो इसमें जो फिजिबिलिटी है इनकी कैलकुलेशंस रन करने की, कंप्यूटेशंस की, वो DFT की काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जब आप उसको स्टडी कर लेंगे और आपके रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे, तो फिर आप कंपेयर करेंगे, तो DFT के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। In this slide, we will try to understand that why we use electron density instead of wave functions. लास्ट स्लाइड्स में हमने एक कंपैरिजन देखा था, एक वेव फंक्शन जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी और एक जो DFT इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अप्रोच थी। तो why this electron density approach is better than wave functional traditional approach? तो इसमें हमारे पास दो ये अप्रोचेज हैं। फर्स्ट द होनबर्ग कोहन रूल है। ये रूल क्या कहता है, इसका जो एक की आइडिया है इस थ्योरम का,
it tells us that total energy of a system is uniquely determined by its electron density. एंड वी डोंट नीड द मैसी वेव फंक्शन। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो मैसी वेव फंक्शन हुआ है। आपने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि जो वेव फंक्शंस की थी, एक जो स्ट्रिंग्स थी रेड कलर की जो आपको नजर आई थी, बड़ी एक मैसी सी सिचुएशन वहाँ पे थी। बट ऑन द राइट साइड जो है वो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अ समथिंग जो इज लाइक स्कैनिंग द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वो अप्रोच डिफरेंट थी, वो मैसी अप्रोच नहीं थी एटलीस्ट। तो इसमें इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स आप यू भी कह सकते हैं कि इफ वी नो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, we already know everything important about our system including its energy. So we don't need the complicated wave function anymore. And the second approach is the Cohen-Sham approach। और कोहन-शाम जो है वो क्या कहती है, इसमें जो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो जो रियल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है विद ईच अदर इन इज अ वेरी कम्प्लेक्स वे। वो जो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन है, इट इज टू क्योटिक टू कैलकुलेट। आप उसको उसकी कैलकुलेशन जो है वो आपके लिए फिजिबल नहीं होती हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोहन-शाम अप्रोच में हम एक जो यूज करते हैं कंसेप्ट नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ सिंप्लीफाइड सिस्टम। हम और इसमें हमें कैलकुलेशंस जो है वो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसमें ये होता है कि हम we replace the real interacting electrons with the simplified system of non-interacting electrons, and these non-interacting electrons produced uh, same electron density, or that's why we call it shadow proxy. Shadow proxy mean a simple system that casts the same density shadow as the real one. सो विजुअल जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो बॉटम पे डायग्राम आप देख रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, जो आपको नजर आ रही हैं डायग्राम्स, दे आर रियल इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली जो डायग्राम्स है हियर यू कैन सी, ये जो स्पेशली डायग्राम है और ये इसका शेडो है, ये इसका शेडो है। दिस इज द एक जो डायग्राम है। और ये डायग्राम आप देखें तो it's they are real electrons and it's look chaotic and highly complex. This is not a something simple, this is the messy जो हम वेव फंक्शन के लिए हमने टर्म यूज की थी। बट ऑन द राइट साइड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें हम वो जो आपका रियल सिस्टम है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते। वी सॉल्व अ सिंपल प्रॉक्सी सिस्टम दैट गिव्स अस द सेम फिजिकल रिजल्ट। सो जो इसकी अगर क्लोजिंग जो लाइन है वो ये है कि जो डीएफटी मेथड है, दिस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, or it replaces the complexity with an equivalent but manageable model. So the DFT approach is better than the wave function, individual wave function finding approach. Now that we understand the theory behind DFT, let's look inside the black box, how the calculation actually works in the practice. So the big idea is iterative process, or DFT. Actually, DFT doesn't solve the system in one step. ये कोई just single step process नहीं है। Instead it uses iterative feedback loop। एक loops आपको नजर आ रहा है, ये एक loop process है, and this loop is called SCF, self consistent field, or SCF method भी हम इसको कहते हैं। and you can think of it as a cycle of guessing, checking and improving until the solution become stable. So first start with the guess।
We begin with an initial guess of the electron density. हमारे पास जो भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर क्या करता है कि इनिशियली उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसको एस्टिमेट किया जाता है. This is not a perfect, just is a starting point for the calculation. Or the second step is energy calculation. इसमें जो सिस्टम आपके पास मौजूद है, जिसको स्टेप वन में उसके बारे में एक इनिशियल एस्टिमेशन की जा चुकी है, तो स्टेप टू में जो एनर्जी कैलकुलेशन का स्टेप है, इसमें दिस स्टेप एक्चुअली टेल्स अस हाउ गुड और बैड इज आवर गैस. जो हमने फर्स्ट स्टेप में गैस किया है, एनर्जी कैलकुलेशन हमें उसके बारे में एक आइडिया देती है. थर्ड स्टेप इज जनरेट द न्यू डेंसिटी. और इसमें एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जनरेटेड बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड इंटरेक्शंस. तो और इसमें दिस अपडेटेड द डेंसिटी शुड बी क्लोजर टू द रियल फिजिकल सिस्टम. हियर इज द स्टेप फोर. स्टेप फोर में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं न्यू डेंसिटी विद द प्रीवियस वन. और इफ स्टिल हम फील करते हैं कि एनर्जी इज स्टिल चेंजिंग, इट मीन के जो हमने ये करेक्शन की है, वी नीड टू रिपीट द लूप. सो हम दोबारा जो है वो इस स्टेज पे आ जाते हैं और अगेन जो है वो एनर्जी कैलकुलेशन होती है. न्यू डेंसिटी उसकी जो डायग्राम है जनरेट की जाती है. अगेन उसको कंपेयर किया जाता है. फिर अगर इफ द करेक्शन इज रिक्वायर्ड, उसको फिर लूप में किया जाता है. और ये जो अनटिल अनटिल जब हम फील करते हैं कि कन्वर्जेंस इज अचीव्ड. सो व्हाट इज द कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस मीन्स कि आपका जो एनर्जी है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो उसमें जो चेंज आ रही है, वो सिग्निफिकेंट चेंज, वो रुक गई है. एट दैट पॉइंट वी कैन से द कन्वर्जेंस इज अचीव्ड. सो ये एक सेल्फ जो कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, लूप में ये वर्क करता है और अनटिल के फाइनल कन्वर्जेंस इज अचीव्ड. So this SCF, self-consistent field loop, is essentially a feedback engine refining the electron density step by step until it is converge, until it is stabilized, until convergence is achieved. So this is the core engine that makes DFT calculations reliable and accurate in the practice. So far, we have simplified the problem using electron density and Cohen-Shaham system. उसमें जो है वो हमने चीज़ों को कुछ फिक्स किया था. और अच्छा, अब सिचुएशन जो है वो ये है कि देयर इज स्टिल वन मिसिंग पीस. एंड वो मिसिंग पीस क्या है? वो इज समथिंग दैट वी कैन नॉट ट्रीट एग्जैक्टली. और ये जो मिसिंग पीस है, ये है एक्सचेंज एंड कोरिलेशन इफेक्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. सो एक्सचेंज एंड कोरिलेशन के जो इश्यूज हैं, अगर हम इनकी रीजंस को देखें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है. और दे आर क्वांटम ऑब्जेक्ट्स और दे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ईच अदर. सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. सो देयर आर टू मेजर रीजंस फॉर दिस इंटरेक्शन. एक तो ये जो हमने अभी देखे हैं, कोरिलेशन और एक्सचेंज. अगर हम कोरिलेशन इफेक्ट्स को देखें तो कोरिलेशन इफेक्ट्स में अगर सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दे रिपेल ईच अदर. But it's not just static repulsion. Electrons continuously adjust their motion to avoid each other. Electrons जो है वो मूविंग
पार्टिकल्स हैं, और ये कंटिन्यूअसली अपनी जो मोशन है वो उसको एडजस्ट करते रहते हैं। और रीज़न क्या है? ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस to they avoid each other. So when one electron moves, the other respond dynamically, and this creates a correlated motion. ये जो कोरिलेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिपेल ईच अदर, और बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज, और वो जब मूव कर रहे होते हैं देयर मूवमेंट is actually adjusted in such a way that they avoid each other. The second relation is the second effect is exchange. ये जो एक्सचेंज का इफेक्ट है ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। और अगर आपको याद हो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो आपने स्टडी किया था, and this principle says that same spin cannot occupy the same quantum state. सेम ऑर्बिटल में जो है वो सेम क्वांटम स्टेट पे दो ऐसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते जिनकी स्पिन सेम हो। सो सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आल्सो अवॉइड ईच अदर ड्यू टू द क्वांटम रूल्स। नॉट जस्ट द रिपल्शन, सिर्फ उसमें रिपल्शन का फैक्टर नहीं आता, मतलब हम उसको जस्टिफाई सिर्फ रिपल्शन का कह के नहीं कर सकते, देयर आर सम अदर थिंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. So if we see the visual explanation given in this slide, so you can see on the left side the correlation is shown as the charge repulsion, like the magnets are pushing each other. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो magnets हैं, they are pushing each other, and on the right side the exchange effect is shown as the spin based avoidance. यहाँ पे आप देखें तो ये देर आर टू पीपल, और उनका जो हैंड्स की डायरेक्शन है वो सेम है, तो फिर उनके लिए वहाँ पे वो कोशिश यही होती है दे अवॉइड ईच अदर, ताकि वो डिस्टेंस जो है वो आपके दरमियान रख सकें ड्यू टू द सेम सेटेट जो है वो आर्म्स की जो डायरेक्शन है। तो इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आल्सो ट्राई टू कीप द डिस्टेंस विद ईच अदर ड्यू टू द क्वांटम आइडेंटिटी। सेम क्वांटम स्टेट पे वो दोनों विद सेम स्पिन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो हियर इज द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन. In Kohn-Sham theorem, the DFT, we replaced the real interacting electrons with the simplified systems. But this simplified system does not fully capture the exchange and correlation. Last time हमने कहा था कि electrons जो हैं वो हम उनको थोड़ा सा चीज़ों को जो है उनका जो इंटरेक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बट जब वो जो सिंप्लीफाइड सिस्टम हम डेवलप करते हैं उसमें ये जो दो इफेक्ट्स है एक्सचेंज एंड कोरिलेशन इफेक्ट्स, इनको वो कैप्चर नहीं कर पाते, इनकी जो है वो there is something missing. So we need to add this missing physics back using a mathematical form, और उसको हम कहते हैं exchange correlation functional. This is the key approximation. तो ये जो एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल है ये एक टर्म है, इसमें you can say कि this is a single term that tries to capture all the complex electron interaction. So these are the basically two electron interaction, exchange and the correlation. So we use the different types of approximation like LDA, local density approximation, and GGA, generalized gradient approximation. These are approximation that we have to consider to study these electron interactions. और इसके लिए ये जो हम टर्म है the exchange correlation functional. So this exchange correlation functional is based on the some approximations to deal this situation. So in simple terms, DFT simplifies the system beautifully.
but the price we pay is approximating exchange and correlation. डीएफटी को हमने एक बड़ा सिस्टम, हमने सिंप्लीफाइड सिस्टम डेवलप किया था उनको स्टडी करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो एक प्राइस पे करनी पड़ी है, एंड दैट प्राइस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल। ये जो एलडीए एंड जीजीए फंक्शन अप्रोक्सीमेशंस पे बेस करते हुए अब हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। So in this slide, we have studied the three things. There are two effects. First is exchange effect, and then there is a correlation effect. Exchange uh, is a quantum effect, and correlation is the dynamic adjustment of electron between uh, uh, due to the Coulomb repulsion. They have the same charges, they repel each other. While this एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल, हम इसको समटाइम एक्स सी फंक्शनल भी कहते हैं। तो दिस इज द exchange या एक्स सी function to deal these type of exchange and correlation effects, and this is based on the approximations like LDA and GGA. So far, we discussed how DFT models electron density and handles interactions using approximations. Now, the next important question is, how do we build these orbitals mathematically? जो ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, हम इनको मैथमेटिकली कैसे बिल्ड करते हैं, मैथमेटिकली इनको कैसे हम डील करते हैं, एंड दैट्स वेयर द टर्म बेसिस सेट कम्स इन. So building the orbitals with the basis set. So what is the basis set? First of all, we define the basis. A basis set is a collection of mathematical functions used to construct the molecular orbitals. You can think of them as a building blocks, like the Lego pieces used to create the shapes of electron density or the orbitals. The more flexible and detailed these blocks are, the more accurate our final structure becomes. So in this slide, you can see there are two diagrams. One is minimal basis and the other on the right side is the large basis set. So on the left side, this minimal basis is we use the large and the simple blocks. You can see here the building blocks are large in the size as compared to the right side image. So जो shape in blocks की वजह से हमने build की है, actually this shape is rough and not very smooth. But on the right side, you can see we have used the many small refined blocks, and this is actually a large basis set. So this type of a basis set produces a smoothly, highly accurate representation. So smaller building blocks means the better resolution and higher accuracy, while the larger blocks जो है वो आपको एक डिफरेंट जो है वो सिनेरियो दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, और जो रेजोल्यूशन है वो भी इज़ द पुअर रेजोल्यूशन एज कंपेयर टू दीज लार्ज बेसिस सेट. So minimal basis set जो है is a very simple example is STO3G. STO3G जो है ये एक the smallest minimum basis set है, and this uses the smallest number of functions needed to describe each orbital. अच्छी बात ये है, it's very fast to compute, but gives rough and less accurate results as compared to some large basis set. And it cannot capture the fine details of the electron distribution. And simply you can say this is like कि ये आपको एक लो रेजोल्यूशन जो इमेज है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है. जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो आप डीएफटी में स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मिनिमल बेसिस सेट लाइक STO3G यूज करेंगे तो एक आपको लो रेजोल्यूशन इमेज, बट दैट प्रोसेस इज वेरी क्विक. जारी बात है आप उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स नहीं है, एक्यूरेसी भी लो है,
So it will be fast to compute. But on the other hand, you can see if we use the large basis set like 631G and the beyond, there are a long list of large basis set. तो ये जो set है, this is more flexible and detailed. It produce smooth and accurate orbitals, but at the same time, this is computationally expensive. और इसमें slow भी है. It takes time, it's time consuming. Resolution is much better than low resolution minimal basis set. So large basis set जो है वो computationally heavy है, computationally expensive है. एक जो इमेज आ रहा है वो हाई रेजोल्यूशन है, परफेक्टली स्मूथ कर्व्स हैं, एक्यूरेसी इज हाई, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड स्लो. सो in quantum chemistry, these orbitals are actually expressed as the linear combination of these basis function. So ये जो basis functions हैं, they are usually the Gaussian type functions. So increasing the basis set means increasing the number of terms in this expansion, which improves the accuracy. So इसमें if we summarize this slide highlights a critical trade-off in the computational chemistry: accuracy versus computational cost. If you will use the small basis set, it will be fast but less accurate. And if you will use the large basis set, it will be accurate, but it will be time consuming and the slow, and computationally it will be heavy, computationally it will be expensive. So in the practice, we use the small basis set for quick screening or for the large systems, and we use the large basis set for the precise calculations and for the publication grade results. So these basis set, they act like a resolution dial in the DFT. They control how detailed and accurate our representation of orbitals will be. So हम ये जो basis set है हम इनको use करते हैं to get our required results. Now we combine everything we have learned: basis set, functionals, and computational cost into the one powerful idea called level of theory. So what is the level of theory? In computational chemistry, the level of theory is the combination of two things: method, and the second is basis set. Method is like how we treat the electron interactions, like इसमें DFT functionals आ जाते हैं. And the second thing is the basis, how precisely we represent the molecular orbitals. So you can say a method is the engine and the basis set is the resolution. So this slide represents the level of theory as a slider. On the left side of this slider, you can see low level of theory. It's a low cost, fast calculations, but it's not very accurate. There are high chances of error, and it may take the minutes. So it's very fast, but not very accurate. On the right side, you can see the cost is high, but the accuracy is better and high accuracy, and it's expensive in terms of the time and the resources. On the left side, you can see this low theory means the small basis set and simple functional like LDA, and the results are fast in the minutes but less accurate, and this situation is useful for the rough estimates or for very large system, while on the other hand this high theory contains a large basis set like 631G or CCPVTZ, like
There are a long list of the good and large basis sets that is used in the high theory situation. And functionals are advanced, like CGA, like hybrid functions B3, LYP. Or results are very accurate, but computationally it's heavy, computationally it's expensive, and it may take hours to week. So this is the most important idea in the computational chemistry. We already mentioned in the previous slide, and this idea is accuracy versus computational cost. You cannot maximize both at the same time. If you will move toward the high accuracy, computational cost increases rapidly and often exponentially. मतलब इसमें ये नहीं है कि there is a linear relationship. आपका जितना सिस्टम कम्प्लेक्स होता जाएगा, आप जो है वो लेवल ऑफ थ्योरी को हाई करते जाएंगे, तो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी. सो नाउ इट्स अप टू यू कि इस स्लाइडर को जो है वो आप मूव करेंगे एंड वेयर यू विल स्टैंड. सो अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है. द ऑब्जेक्टिव और द गोल इज नॉट ऑलवेज गो टू द हाईएस्ट लेवल. It's up to you. It's your requirement. For example, if you move the slider just far enough to answer your chemical question, अगर आपका question इस position पे solve हो जाता है, then you don't need to go to the high theory side, on the right side. Because if you will move to the right side, then it means the cost of this calculation will increase, because the high theory calculations are computationally expensive. For example, अगर आप geometry optimization करना चाहते हैं, so this medium level is often enough. But for the reaction energies, like you need the higher level, and for the large biomolecule, there is a compromise required. So in the practice, chemists often use a multi-level approach. Geometry वो optimize हम पहले कर लेते हैं. We do it at the lower level, then we calculate the energy at higher level. So this is the balance of accuracy and cost efficiently. So the level of theory is your control knob. So you can move this control knob, and mastering it is the key to doing efficient and reliable computational chemistry. So when you will start the work in the computational chemistry, with the passage of time, you will have a very good idea where to stop or adjust this slider knob. आप लो कास्ट पे कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, हाई कास्ट पे कौन सी कैलकुलेशन करेंगे. तो ये जब आप स्टडी करना शुरू करेंगे और आपको जब experience होगा, then you will be able to decide. And placing this knob at the right position is very important, because इससे आपकी जो है computational जो calculations कर रहे हैं, वो उनकी जो efficient भी है और reliable भी है. So adjustment of this knob is very important to do the calculation at required level of theory. Now let's bring everything together and look at how the DFT is actually used in the practice. From building a molecule on the screen and to running the calculations on the high performance computers, cluster, or the server. So softwares like the Gaussian software and other softwares as well, they handle the heavy mathematics, but the chemist role is to set up the problem correctly and interpret the results. So first step is build the geometry of the molecule. We start by building the initial molecular structure, and this can be done by using molecular editors like Gauss view, और इसमें जो important point है, the quality of your starting geometry is very important, because it affects convergence and the final result. The step 2 is selection of level of theory. So
we have to choose the level of theory. That means selecting a functional and a basis set, and this decision is very important because this decision controls the balance between accuracy and computational cost. So for example, B3LYP and 631G is a common starting choice for most of the calculations. The step 3 is running the calculation. So at this stage, the software performs SCF loop, uh, and it refines the electron density until convergence point is reached. And the important thing is that this is the black box where all the quantum mechanics happens. The step 4 is structure optimization. So once the calculations runs, we often perform geometry optimization. Most of the time, this is our first calculation, and the software adjusts atomic positions to find the lowest energy structure. And this lowest energy structure gives the most stable molecular configuration. The last step is analyze the outputs. Finally, we analyze the results, and this analysis includes total energy, molecular orbitals, charge distribution, vibrational frequencies. So this is where the chemistry comes in, and we interpret the data to answer real chemical questions. So this workflow in the 5 steps shows the DFT is not just theory; it is the practical used step by step, and success depends not just on the softwares but on the user's choice. The common mistakes the often the researchers do uh, is the first thing is the poor initial geometry. This is the step 1. Wrong level of theory, ignoring the convergence issues. This step 4, and the step 3. And misinterpretation of results is another common thing that needs a careful setup and the validations. All these are essentials. So in summary, the DFT is a powerful computational tools, but it require informed decisions at every step, from input to the final this interpretation step. So far, we have discussed how DFT works, the theory, approximations, and the workflow in last slide. But now comes the most important question. What does DFT actually give us? The most fundamental output of any DFT calculation is the total energy of the system, and this energy represents the overall stability of molecule. A lower energy means the most stable system. So why the total energy is powerful? Even though we get just one main number, total energy, we can extract a wide range of chemical information from it. And this is the real power of the DFT calculation. So we start with these informations. Molecular orbitals, here you can see on the left side first. Molecular orbitals, we obtain these molecular orbitals from the DFT calculations, and these helped us to understand the reactivity, bonding, HOMO-LUMO gap. For example, HOMO shows the electron donation, and the LUMO shows the electron acceptance. The second is geometry optimization. It's about the structure. DFT allows us to find the most stable molecular geometry, and this includes the bond lengths, bond angles, 3D structures, and this is the often more accurate than experimental estimation in the some cases. Then we can see here the vibrational frequencies. We can also calculate the vibrational frequencies. These frequencies are used to simulate the IR spectra, Raman spectra, and these calculations, frequency calculations helps compare the theoretical results with the experimental lab data.
Then there is a charge distribution. DFT also provides the detailed charge distribution across the molecule. And this shows where the electrons are concentrated, in which regions which regions are the electron rich, are the electron poor, and this is critical for predicting the reaction sites. So even the DFT gives one core output, the total energy, and it allows us to understand the structure, reactivity, spectroscopy, and the electronic behavior. And you can say it translates the quantum mechanics into the chemically meaningful information in the form of molecular orbitals, vibrational frequencies, geometry optimization, charge distribution. So in this slide, you can see, you can answer these questions. What is the main output of DFT calculation? This is the total energy of the system, and what can we derive from the total energy? It's the geometry, it's orbitals, vibrational frequencies, and the charge distribution. And why this DFT is useful? Actually, it connects the quantum mechanics with the real chemical properties. Well, it is important to understand that DFT is powerful, but it's not perfect. And the reason is because we approximate the exchange correlation functional, and DFT naturally has some limitations and blind spots. So due to these approximational functionals, there are some shortcomings in the DFT. So first we see where the DFT shines. The first point is DFT works very well from medium to the large molecular systems. Uh, Compared to the highly accurate methods like CCSD, DFT is much more computationally feasible. The second is geometry prediction. It is excellent at predicting the geometry, bond lengths, bond angles, molecular structures. DFT can do this job very well. So this is why the DFT is widely used for the geometry optimization. Then we can see the electronic structure. Uh, Electronics DFT provides reliable information about the electronic structure. And this includes orbitals, charge distribution, and the general reactivity trends. And then we can see accuracy to cost ratio. One of the DFT biggest advantage is its accuracy to cost ratio. It gives reasonably accurate results at the fraction of computational cost. On the other hand, where the DFT fails, the first is this weak interactions, the system dominated by weak interactions like van der Waals forces, and DFT struggles with these weak intermolecular forces like the van der Waals interactions, and the standard functionals often underestimate these type of weak interactions. The second point is high precision requirement. In the cases where we need the high accuracy, the DFT may not be sufficient, and more advanced methods like post-Hartree forks are required. The third is functional dependence. DFT results depend heavily on the choice of functional. Different functionals can give you the different results for the same system. So this makes method selection very important. So DFT is not a universal solution. It's not perfect, but it's a model with assumptions and approximations. And if you have the good understanding, then maybe it will work for you. But it fails, then this is also option in the some cases. So in the real research, we validate the DFT results with the experiments when possible. We choose functionals very carefully, and sometimes we combine the DFT with the other methods. So in summary, DFT is a very powerful tool, but like any model, its reliability depends on how wisely you use the DFT. Now let's step back and look at the bigger picture where DFT is actually used in the modern scientific research.
research. Because of its ability to predict the electron behavior, DFT has become a universal computational tool across the chemistry and the material science. So if we see the drug design, it has a lot of application in the pharmaceutical industry. So this is one of the major application, the drug design. DFT helps us understand how molecules interact with the biological targets like proteins and enzymes. So instead of synthesizing thousands of compounds in the lab, we can simulate binding and stability computationally before we start synthesis of these compounds in the lab. So the key benefit is faster drug discovery with reduced cost. Material science is another major area where the DFT is used. So DFT is used to predict the electronic properties, band structure, conductivity, and this is very important for designing the batteries, semiconductors, solar cell materials. So DFT helps us to design the materials before actually we make them. Catalysis is another major area. DFT is widely used in the catalysis, and it allows us to study the reaction mechanisms, transition states, energy barriers, and these type of calculations are often impossible to observe directly in the experiments. So the DFT helps in designing more efficient and cheaper catalysis. So across all these fields, the common idea is DFT allows us to predict and understand chemistry at the atomic level. Now we have used the term universal engine. It is called universal engine because it can be applied to molecules, solids, surfaces, reactions, and all using the same fundamental framework. In simple terms, DFT bridges the gap between theory and the real world applications, helping scientists design drugs, materials, and reactions more efficiently. To conclude, we are witnessing a shift toward the era of digital chemistry, where the computation and experiment work hand in hand, they work together. Computational methods like DFT do not replace the laboratory or the experiment, but what the DFT do, the DFT enhance experiments by acting as a predictive tool. They allow the researchers to test the ideas, narrow possibilities, and the guide experiments more efficiently. And if we see the core idea of the DFT, DFT is built on a powerful simplification. Instead of tracking every individual electrons, we describe the system through the electron density, the collective behavior of electrons in the electron cloud. So this is what makes complex quantum problems computationally feasible. Uh, if we use the DFT calculations, DFT effectively, it's not about complexity, it is about making informed decisions. So choosing the right method, selecting an appropriate basis set, and balancing the accuracy with computational cost is the very important in DFT. If we see in the big picture, this integration of the theory, computation, and experiment is reshaping the modern chemistry. So we can now predict, design, and understand the chemical systems before performing the experiment. And in the summary, the DFT transforms the chemistry from something we only observe into something we can predict, we can simulate, and we can engineer. Thank you.